हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक्स, और आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है कार्डियोवास्कुलर डिसीज का। एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द स्प्लिटिंग ऑफ S2. Okay, what is the splitting of S2? What is physiological splitting? Okay, when there is inspiration, there is a drop in intrathoracic pressure. When we get some breathing during inspiration, the intrathoracic pressure is decreased. Okay, you know that all the major vessels are in the thoracic. So what will happen when there is a decreased pressure in this intrathoracic level? The pressure on inferior vena cava is also decreased. It is common sense. When there is decreased pressure in inferior vena cava, so what will be happen? Venous return will increase. When venous return is increased, the right ventricular filling will be increased. And right ventricular filling, its mean more will be stroke volume. Mean more of the blood will go from the right ventricle into the pulmonary trunk, and more of the blood will go from pulmonary to the left atrium, and more will go from left atrium to the left ventricle, and more will left ventricle to pumping out of aorta, and more will be stroke volume. Okay, so in simple, during inspiration, venous return is increased, stroke volume is increased, and the most important time, when there is a more blood in the right ventricle will take much time to eject this blood. Okay, एक नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है, उसमें नॉर्मली क्या होता है, जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन के अलावा हम वैसे ब्रीदिंग के दौरान हमारा जो साइकिल होता है, राइट, जो एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ब्लड आता है, लाइक वो 50 ml. Okay, so right ventricle easily eject करता है, but when there is a more blood, more venous return during intrathoracic pressure is decreased, so what will happen? There will be a more time during ejection. So it is increased right ventricular ejection time. It will cause the delayed closure of pulmonic valve. Okay, so what will happen? Delayed closure of pulmonic valve. Okay, first of all, we should know that, okay, which valve close later, pulmonic or aortic. Okay, so you know that pulmonic valve closes later as compared to aortic valve. Okay, so we know a aortic valve and pulmonic valve both closes simultaneously, but not. There is a gap, there is a delay, which is called normal delay here. Okay, this is normal delay. First is closure of aortic valve, and there is a closure of pulmonic valve. Okay, why? Because due to increase venous return during inspiration, pulmonic valve closes late because of increased right ventricular ejection time. Okay, so when there is a decreased pulmonary impedance, it is the capacity of the pulmonary circulation during inspiration. So what happened during inspiration? Pulmonary circulation capacity is increased. Okay, so it's further contribute that the pulmonic valve should close later down. A delay must happen. Okay, so in simple summary of that, what is physiologic splitting? The physiologic splitting is a normal delay between the aortic and pulmonic valve. It's mean the first there is the closure of aortic valve, and then there is a closure of the pulmonic. So when I will say S2, so it has two components. Okay, S2. One is A2, it is A mean aortic component, and P2P is pulmonic component. This is aortic component, and P is the pulmonic component. Okay, so normally you can see in this picture during the expiration there is a no change. This is the normal. Okay, because there is a only delay in the inspiration. This is normal. You can see expiration, there is a nothing, it's okay, but inspiration, this delay between this layer of aortic component and pulmonic component, you can see in the red, this is a some having a delay. First aortic valve closes, and there is a layer of pulmonic valve. This is called normal delay. Okay, why it happens? Due to the inspiration, due to it is called physiologic splitting. Now next we will do our topic, what are the pathologies of related to this S2. Okay, what are the different splitting mechanism in S2. Okay, I will make some diagram, that is very important diagram for all of you people. Okay, and I recommend all of you to draw this diagram, okay, in your notebook. First of all, we will, in the middle, we will have a fixed splitting in the middle. Okay, and on the right side I will draw with this color, and on the left side I will draw with this color, green color. Okay, on the above I will draw with blue color, and on the below I will draw with this color. Okay, so when you are remembering the splitting of S2, always remember that on middle, which is a fixed splitting of the S2, in the middle, this is a fixed splitting of the S2. This happens due to the ASD, atrial septal defect.
which is a fixed splitting. Okay, this is fixed splitting. When I will go to the right side, this is the right side, this is right side. So what will be the cause? It will be a wide split on the right side. Remember, it will be a wide split on the right side. So what are the causes of wide splitting on? These are the right bundle branch block. Remember always, this is right side. So it is cause is the right bundle branch block. And the next is the right-sided valve stenosis, so which is pulmonic stenosis. So it is very important to make it simple and easier method to remember is that draw this for on the right side, there is a wide splitting and wide splitting happens in right bundle branch block and pulmonic stenosis. Now going to the left side, going to the left side. So what will be happening on the left? This is left side L. So it is the paradoxical. Okay. So paradoxical splitting. What are the causes of paradoxical splitting? Left bundle branch block. It is left side, so it is left bundle branch block and left-sided valve stenosis. Left-sided, which is counterpart of pulmonic is aortic stenosis. Aortic stenosis, but severe aortic stenosis. This is very important. Okay, so what we have discussed that number one, there is a fixed splitting, which is atrial septal defect. It happened. Number two, we have discussed that on the right side, there is a wide splitting because it is on the right side. So there will be the right bundle branch block and right-sided pulmonic stenosis. On the left side, there is a third point, which is paradoxical splitting, and that paradoxical splitting is in the left side. So it will be the left bundle branch block and left-sided of the valve stenosis, that is aortic stenosis. Okay, then the fourth point. Next, you will see in the diagram, I have make this up. Up mean high, high mean loud. So what will be the cause of the loud S2? And what will be the cause of the soft S2? SOFT soft. So in the upper there is a loud S2, in the lower which is soft S2. So what are the causes of the loud S2? Loud S2, hypertension. Okay, hypertension. And what are the causes of soft S2? That is the mild aortic stenosis. Mild aortic stenosis. So it is very, very important concept here. Oh, okay, so we discussed 1, 2, 3, and the fourth was soft, which is going down, and fifth point was loud. So it is very important, and all the people must draw this very beautiful algorithm. So what are the splitting? It is very easy to remember from this diagram. Okay, so first of all, I can repeat in just a 1 minute. Just 1 minute. First of all, in the middle, in a fixed, you should have to draw fixed splitting of S2, that is an atrial septal defect, and you must draw a right side and the left side. On the right side, there is the wide splitting that happen in the right-sided right bundle branch block and right-sided valve stenosis. This is pulmonic stenosis. And the left side, there is a paradoxical that is happen. This is a left, so it is left bundle branch block and the severe aortic stenosis. Okay. And the fourth point, which is a lower area, that is soft splitting that happen in mild aortic stenosis. And the fifth point, which is loud splitting, loud S2, it is actually the soft and loud S2 is not splitting, but it is actually cause. Okay, what is the disease in which soft S2 occurs? Aortic stenosis. What is the disease in which there is a loud S2? That is hypertension. Okay, so this was our main and easy concepts. Now we are going to our topic. A quick summary: wide splitting. So always remember, I will make that same color. So we discussed the wide splitting. Okay, with this color. So remember, it was on the right side. So what will be happening? It will happen in pulmonary stenosis and right pulmonary. So what will happen? The wide splitting. Actually, the word wide is exaggeration of normal. Okay, it is exaggeration of normal splitting. You can see this. This is abnormal delay. Normal was present when we see previously that it was like this delay, but it is exaggeration. So it is just exaggeration of the normal splitting. Okay, and the next we discussed that, which is the paradoxical, which is green. Okay, and then we discussed the fixed splitting. Okay, fixed was very easy. It is in atrial septal defect. Okay, when there is a, so you can see in this diagram, it is a fixed expiration and inspiration, both having a fixed delay. This is a fixed delay. Delay is present, but it is fixed, and we cannot appreciate while listening the sounds. So it is independent of respiration. It's mean when we listen we cannot appreciate because both expiration and inspiration having the same delay. It is fixed splitting. Now paradoxical splitting, we discussed paradoxical splitting. It happened on the left side L,
and it is the left bundle branch block and the spare aortic stenosis. In this paradoxical, what is paradoxical? Paradoxical is mean that it is just reverse paradoxic, because we studied that the delay happens in inspiration. We studied that delay happens on inspiration, but this paradoxical splitting will occur on in expiration. On expiration, the split can be heard, not in inspiration. This is why it is called paradoxical. Okay. Normally we discuss it's happen in inspiration, but in paradoxical splitting, it will happen on the expiration. Okay. So we have discussed the splitting of the S2. That is very important topic, and I made a very beautiful diagrams to memorize it so simple. Thank you. So now we will go to our next topic. Okay, we will discuss auscultation of the heart. What are the different areas where we can appreciate heart sounds? First of all, we will discuss what are the flow murmurs and what are the pathologic murmurs. Okay. First of all, we should know this. What are the flow murmur and what are the pathologic murmurs? First of all, we should know that. The flow murmur, which are benign murmurs having a specific characteristics when there is a listen, and pathologic murmur has specific characteristics. So how you can appreciate the difference between the benign and pathologic murmur? When you take the history of the patients, the benign murmurs, there will be no problems. There will be normal energy, there will be normal appetite, there will be normal activity, no history of families, there will be no history of any disease. But you will ask when there are pathologic murmurs, there will be a history of some findings. What findings? Diaphoresis, fatigue, exercise intolerance, weight loss, dizziness, shortness of breath, and family history of sudden cardiac death. There must be history. Okay. Whenever you find any history with this pathologic history, dizziness, shortness of breath, always remember the murmur which can be appreciated, that is pathology. What are the benign murmurs? Benign murmur having a characteristics feature, that is this is early or mid systolic murmurs. We will study what are systolic murmur, what are diastolic murmur, but benign murmur are always remember it is systolic murmur. They have grade 1 and grade 2 intensity that decrease on the standing and decrease on Valsalva maneuver. We will study what are these maneuvers, okay? And then the murmur feature are low pitched. Remember this, the murmur feature is low pitched in the benign murmurs, and they are musical murmurs, okay? Next murmur, what are the findings in benign murmur? No finding. And what are the workup needed? No workup. But in the pathologic murmur, they are harsh. Remember, they are very harsh, and they can be allosystolic murmur, they can be diastolic murmur, and they are much greater intensity. Okay, and they increase with standing and Valsalva maneuver. Actually, the standing and Valsalva maneuver, these both causes the decrease in venous return. Decrease in the venous return. So when there is decrease in the venous return and there is increase the murmur, it means there is some pathology. Okay, but because the benign murmur are the flow murmur, when there will be flow, there will be high. So it means when there is the standing and Valsalva, we are decreasing the venous return. When there will be no venous return, there will be no blood in the chambers, there will be decreased benign murmur activity. So remember this. Oh, and the pathologic murmur, what will be? There will be a loud fixed split or single S2. Okay, there will be other some pathologies like decrease or absent femoral pulses. When there is pathology in the murmurs in the valve, so there will be decreased flow to descending aorta. So there will be decrease or absent femoral pulses in many of the murmur we will study. What workup is needed in pathologic? That is ECG. We need to check if there is hypertrophy, left ventricular hypertrophy, because in left ventricular hypertrophy there are high voltage ECG, and we check the echocardiography. Okay. Now going to our auscultation topic. Okay, what are the different areas where we can appreciate these murmurs? Okay, first of all, we will study flow murmurs, where we can listen our flow murmurs. The flow murmur can be appreciated in second right intercostal space, okay, and which is right intercostal space, and second left intercostal space. Okay, this is right second intercostal space. This is called aortic area. Okay, always remember this is, and pulmonic area, that is left second intercostal space. Okay, it is left second intercostal space. So in this, first of all, we will study number 1 point. What is aortic area? Aortic area is the second right intercostal space, and the murmur is aortic stenosis, which we can listen in this phase, in this position. And the murmur which is not written here, that is extra, which is aortic regurgitation due to root dilation. Okay, in the second right intercostal space, we can also listen
aortic regurgitation due to root dilation. There are different causes of aortic regurgitation. One of them is root dilation. So root dilation, aortic regurgitation is also appreciated in the right second intercostal space. Going to our next, which is second space, which is on the left side, that is pulmonic area. Remember from pulmonic, so what will be? It will be some pulmonary murmur, like what is pulmonic stenosis, and also atrial septal defect. Remember atrial septal defect, and also the flow murmur in the second space. Now, our third point I will highlight with a blue. Third is the left sternal border. Left sternal border. Okay, this is left sternal area. Left sternal border. In left sternal border, we have aortic regurgitation. We have pulmonic regurgitation. Remember always their regurgitation murmur of the counterparts like aorta and pulmonic. Both are on left sternal. Okay, most likely they can appreciate it in the second and third intercostal space toward the lateral of the sternum, toward lateral of the sternum. Okay, at this level and at this level. Third, second, and third intercostal space, just lateral to the sternum. Okay. What are the most important systolic murmur in this lateral sternal area, that is hypertrophic cardiomyopathy? Okay. So we have discussed also 1, 2, and third point. Now we will discuss our fourth point, what is tricuspid area. Tricuspid, I will highlight with this color tricuspid area. It is, remember from the tricuspid, it is tricuspid regurgitation here, and there is a ventricular septal defect. Tricuspid regurgitation, ventricular septal defect. Okay, why? Because if you appreciate this, this is in the fourth intercostal space, fourth space, which is here. And you can see this is including the right ventricle and left ventricle, this area. So the septal defect and the right ventricular, which is tricuspid valve, both are appreciated in this tricuspid area, which is fourth intercostal space. Remember this, you can write in your book. Tricuspid is fourth intercostal space. Okay, and the next, very important, tricuspid stenosis, also appreciated in tricuspid. Remember from the tricuspid word, tricuspid regurgitation and tricuspid stenosis, both in tricuspid area, and the one that is new is the ventricular septal defect, because it is just between this right and left ventricle, this septum. So this defect also appreciated in tricuspid area. So one very important point is the fifth point, which is apex, mitral area. Okay, I will show with this color, okay, mitral area. So remember always, whenever you heard the word mitral in exam, this is very important. Whenever you heard mitral, always it will be apex. Mitral regurgitation, mitral valve prolapse, mitral stenosis. Remember, any murmur that starts with mitral, it is always on the apex, that is mitral area. What is the apex? This is the mid clavicular line, mid clavicular line. Okay, and the space is fifth intercostal space. This is called apex, mitral area. Is that clear? So now we discuss 1, 2, 3, 4, 5 different areas where we can appreciate the different type of murmurs. So we will discuss the what are the different effects that causes increase or decrease in the murmurs. What are the different effects that can increase and decrease the murmur? Okay. So the next, first of all, we will discuss what is standing Valsalva. Okay. First we discuss what is Valsalva. With this panel, I will discuss Valsalva. Valsalva is actually a forced expiration with closed glottis. Okay, Valsalva is forced expiration with closed glottis. Okay, इसके 5 different इसके steps होते हैं. Okay, 1, 2, 3, 4 and 5. वन पे हमारा 1 point क्या होता है? 1 point ये होता है जब हम forced expiration कर रहे होते हैं. When we do the forced expiration, what will happen? What will happen? It increases the intrathoracic pressure. Sorry, decreases the intrathoracic pressure. जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर फेज 1 में डिक्रीज होता है तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 15 मिलीमीटर मर्करी बढ़ जाता है. दिस इज फेज 1 ऑफ वेसल. फिर उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट फेज होता है, दैट इज फेज 2. इंपॉर्टेंट फेज जो है वो फेज 2 है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन फेज. स्ट्रेन फेज में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेन फेज इज दैट इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर. जब राइट एट्रियल प्रेशर हमने डिस्कस किया था, स्टार्लिंग कर्व जब बढ़ता है तो क्या होगा? वीनस रिटर्न कम होगा. वीनस रिटर्न कम. वीनस रिटर्न कम होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो वॉल्यूम है वो भी कम होगा. So this second phase, which is strain phase of Valsalva, which is called standing Valsalva, is very important, जो कि यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं. Okay. अब बाकी 3, 4 और 5 पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं,
उसको भी हम जल्दी जल्दी स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज द थर्ड पॉइंट इन वेल्सल्वा स्ट्रेन। वेल्सल्वा का जो तीसरा होता है कि वो क्या होता है, जब वीनस रिटर्न कम होता है तो क्या हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, व्हिच इज फेज 3। फिर फेज 4 में क्या होता है, माइल्ड मोर डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, रिटर्न ऑफ नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। ओके, सो हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, सेकंड स्ट्रेन फेज। व्हाट हैपेंस, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ा, वीनस रिटर्न कम हो गया, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेंट्रल स्ट्रेन फेज। ओके ओके, हमने डिस्कस किया कि स्टैंडिंग वेंट्रल स्ट्रेन फेज में क्या होता है, प्रीलोड कम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का वॉल्यूम कम। सो जनरलाइज्ड आपको याद होगा, जब भी कोई चीज फ्लो करती है, ब्लड फ्लो करेगा तो कोई चीज साउंड आएगी ना। जब हमारे पास प्रीलोड कम है तो रिमेंबर ऑलवेज, दिस इज जनरलाइज्ड टर्म, जब भी हमारा फ्लो कम होगा, मोस्ट ऑफ द मर्मर डिक्रीजेस, द मर्मर दैट डिक्रीज विद दिस स्टैंडिंग वेंट्रल मैन्यूवर, ये डिक्रीज पोर्शन है, ऑलमोस्ट ऑफ द मर्मर। क्यों, क्योंकि उसका फ्लो कम है, दिस इज जनरलाइज्ड टर्म। लेकिन एक्सेप्शनल है एक चीज की, कि इंक्रीज करेंगे ऐसे मर्मर के, दो चीजों को आपने एक्सेप्शनल समझना है। दैट एक्सेप्शनल केस ऑफ दीज टू इज माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इनको आपने समझना है कि ये क्या है, एक्सेप्शनल है, कि इसके थोड़ा डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट रूल है। ओके, वो कैसे, इस तरह से कि माइट्रल वेल्व जो प्रोलैप्स होता है और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होता है, उनके मर्मर लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड के कम होने की वजह से बढ़ती है। वो हम डिस्कस करेंगे उसके आगे वेल्व नेचर्स में, कि ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये हमारे पास वेल्व है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर इस तरह ये डायलेट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भरा हुआ होगा, यहाँ पे ज्यादा ब्लड होगा, ज्यादा ब्लड होने से लेफ्ट वेंट्रिकल में इनके मर्मर डिक्रीज होते हैं, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स के और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ओके, क्यों, जब भी ये फिलिंग होना जरूरी है, जब ये ज्यादा फिलिंग होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो क्या होगा कि जो कॉर्डा टेंडनी जो बेसिकली अपवर्ड चला जाता है, वो नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बंद हो जाता है, तो रिगर्जिटेशन नहीं होती, तो मरमर कम हो जाता है व्हेन वी फिल दिस लेफ्ट वेंट्रिकल। तो रिमेंबर कि जब हम प्रीलोड कम कर रहे हैं तो मरमर बढ़ जाता है, इसका उलट। मैं इसको अब ऐसे कर देता हूँ, इसमें अब कम ब्लड है, तो जब कम ब्लड होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो ये मरमर बढ़ जाएगा। इसी का उलट आ जाती है, इसका उलट आ जाती है, इसमें हम सिक्वेटिंग पोजीशन पे आते हैं, ठीक है, या फिर हम पैसिव लेग रेज करते हैं, सिक्वेटिंग पोजीशन पे या पैसिव लेग रेस पे आती है। ये क्या करते हैं, ये प्रीलोड को बढ़ाती हैं। पैसिव लेग रेस क्या करता है, प्रीलोड बढ़ाता है, क्यों, क्योंकि लेग्स में से जो सारी वेन्स हैं वो वापस इंफीरियर वेना केवा की तरफ ब्लड लाती हैं, तो ब्लड। सिक्वेटिंग पोजीशन में प्रीलोड भी बढ़ता है, आफ्टर लोड दोनों बढ़ती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्क्वेटिंग इंक्रीजेस प्रीलोड एंड आफ्टर लोड बोथ। अब हमारा प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों बढ़ती हैं, जब बढ़ेगा तो उसका उलट इफेक्ट होगा, कि माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी अभी डिस्कस किया है, कि जब इनकी ज्यादा ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो इनके मर्मर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। कि ये मैंने जो पैसिव लेग रेज एंड सिक्वेटिंग जो है वो डिक्रीज करता है किसके, माइट्रल वेल्व कोलैप्स और एचसीएम के मर्मर। और उसका उलट जो हमने पहले पढ़ा है, अगर क्या होगा, फ्लो फ्लो हमारा ज्यादा होगा एंड मोस्ट ऑफ द मर्मर में क्या इफेक्ट आएगा, मोस्ट ऑफ द मर्मर क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा फ्लो ज्यादा है, दिस इज जनरलाइज्ड। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि ज्यादा प्रीलोड होगा ज्यादा मर्मर, कम प्रीलोड होगा कम मर्मर होंगे। एक्सेप्शन किस चीज की है, माइट्रल वेल्व कोलैप्स और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ओके, फिर हम डिस्कस करते हैं जी हैंड ग्रिप क्या करती है, हैंड ग्रिप। ओके, हैंड ग्रिप का क्या इफेक्ट है, इसका क्या, आफ्टर लोड बढ़ाती है, ओनली आफ्टर लोड हैंड ग्रिप। सो जब आफ्टर लोड बढ़ता है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें जो रिमेंबर करने वाला है, मोस्ट लेफ्ट साइडेड के जो मर्मर हैं वो हो जाते हैं इंक्रीज। क्यों, आपको देखा होगा कोई भी मर्मर हो लेफ्ट साइड का, मैंने आपको समझाया था आफ्टर लोड इज ऑब्स्ट्रक्टिंग पॉइंट अबव द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब वहां पे मैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ाऊंगा तो लेफ्ट साइडेड के मर्मर मोस्टली बढ़ जाती है। लेकिन कौन से दो मर्मर हैं जो एक्सेप्शनल है, जो कम होंगे, वो कौन से कम होंगे हेड ग्रिप से, एक है एआर्टिक स्टेनोसिस। एआर्टिक स्टेनोसिस क्यों, क्योंकि एआर्टिक स्टेनोसिस के ऊपर अगर हम एक और ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, जो फ्लो है वो कम हो जाता है। देखें अब, ये है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एक एओर्टा है, ठीक है, यहाँ से ये ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा की तरफ, ठीक है, ये इतना उसकी क्या थी, ये स्पीड से ऐसे ब्लड जा रहा था। जब मैं ऐसे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लगाऊंगा एआर्टिक स्टेनोसिस में, हैंड ग्रिप करके आफ्टर लोड बढ़ाऊंगा, तो यहाँ से जो ब्लड है वो कम जाएगा। जब कम ब्लड जाएगा तो इसका मतलब है यहाँ से फ्लो कम होगा, जब फ्लो कम होगा तो मर्मर डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एआर्टिक स्टेनोसिस, कि हैंड ग्रिप से आफ्टर लोड बढ़ेगा, आफ्टर लोड के बढ़ने से क्या होगा, एआर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर कम होगा। इसी तरह सेम एचसीएम, एचसीएम क्या, हैंड ग्रिप की वजह से आफ्टर लोड बढ़ता है, जहाँ पे आफ्टर लोड बढ़ेगा, जब आफ्टर लोड बढ़ेगा तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कम ब्लड बाहर फेंकेगा। मैंने आपको भी मैकेनिज्म समझाया, जब ज्यादा ब्लड रहेगा इधर
तो HCM का मरमर भी कम हो जाएगा। ठीक है, HCM और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स को चाहिए कि ज्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड इकट्ठा रखें ताकि उनका मरमर कम हो। तो इस तरह आपने रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट इज इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में जनरलाइज क्या होता है, वेनस रिटर्न बढ़ता है, तो राइट साइड के मरमर बढ़ते हैं, राइट साइड के मरमर बढ़ते हैं इंस्पायरेशन में, और लेफ्ट साइड के कम होते हैं। रिमेंबर, जनरलाइज्ड इंस्पायरेशन इंक्रीजेस वेनस रिटर्न, जिससे राइट साइड के मरमर बढ़ेंगे और लेफ्ट साइड के कम होंगे। ओके, तो दिस वाज आवर टॉपिक के मरमर्स का डिक्रीज एंड इंक्रीज। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट मैन्यूवर्स हमने वो डिस्कस किए, एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मरमर्स। Now we will discuss one by one what are the heart murmurs. First of all, we will differentiate what are the systolic murmur, what are the diastolic murmur, and what are the hollow systolic murmur. Okay, आपको इन ये टर्म्स आना बहुत जरूरी है। फर्स्ट डिवीजन इज सिस्टोलिक, नेक्स्ट डायस्टोलिक, एंड थर्ड इज द hollow systolic। ये क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टोलिक, सिस्टोलिक का मतलब यह है ऐसे मरमर जो सिस्टली में होते हैं। अब सिस्टली कब होती है? जब माइट्रल वेल्व क्लोज होता है, ओके, और एओर्टिक ओपन होता है, ट्राइकस्पिड क्लोज होता है और पल्मोनिक ओपन होता है, तो ये होता है सिस्टली। तो इसका मतलब है कि जब मसला आएगा सिस्टली के दौरान, वो किस में होगा? या तो एआर्टिक स्टेनोसिस होगा उसमें। क्यों? क्योंकि माइट्रल तो बंद है जब सिस्टली हो रही है, तो माइट्रल का है ही नहीं सिस्टोलिक मरमर। तो जब सिस्टोलिक मरमर वो होंगे जो सिस्टली में एक्टिव है। सिस्टली में कौन एक्टिव होता है? एओर्टा एक्टिव होता है या पल्मोनिक एक्टिव होता है। यानी कि स्टेनोटिक मरमर है वो या तो एओर्टा का होगा या पल्मोनिक। फिर हम आ जाते हैं रीगर्जिटेंट। रीगर्जिटेशन किसकी होगी? देखो नॉर्मली क्या है, सिस्टली के दौरान माइट्रल वेल्व क्लोज्ड है, अगर वो रीगार्ज करेगा तब एबनॉर्मल होगा, उसका मतलब वो भी सिस्टोलिक मरमर होगा अगर माइट्रल रीगार्ज करेगा। इसी तरह माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स है, वो भी सिस्टोलिक। ओके, सो वी डिस्कस के सिस्टोलिक मरमर क्या होते हैं, और सिस्टोलिक मरमर की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे ऑलवेज अकर बिटवीन S1 एंड S2, बिकॉज इट ऑलवेज अकर ऑन द S1 एंड S2, S1 के बाद और S2 से पहले, ये सिस्टोलिक मरमर होते हैं। ओके, फिर हम डिस्कस करते हैं डायस्टोलिक। ओके, डायस्टोलिक में हमारे पास आ जाते हैं, हमने डिस्कस किया डायस्टोलिक कौन से होंगे। अब डायस्टोलिक में क्या होगा, वो ये होगा कि अब एओर्टा और पल्मोनिक तो क्लोज हो चुकी हैं, अब खुलेंगे कौन से मरमर? माइट्रल और ट्राइकस्पिड। इसका मतलब है अगर माइट्रल और ट्राइकस्पिड नॉर्मली क्या होते हैं डायस्टोली में खुल जाती है। ओके, खुल जाती हैं, ओपन अप होती हैं, तो इसका मतलब है कि माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड अगर स्टिनोस्ड हो जाएं तब नॉर्मल, वो क्या मरमर होंगे? वो डायस्टोलिक मरमर होंगे। इसी तरह माइट्रल स्टिनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टिनोसिस, ये मरमर जो होंगे वो डायस्टोलिक मरमर होंगे। इसी तरह आपने देखा है कि एओर्टिक और पल्मोनिक होती हैं क्लोज्ड, अगर वो रीगार्ज करना स्टार्ट कर देंगे तो एओर्टिक एंड पल्मोनिक रीगर्जिटेशन डायस्टोलिक मरमर। और इनका हमेशा याद रखना है, ये S2 के बाद आती है। हमने डिस्कस किया सिस्टोलिक मरमर कम्स ऑफ बिटवीन S1 एंड S2, एंड डायस्टोलिक मरमर कम्स आफ्टर S2। ओके, इज दैट क्लियर? तो हमने डिस्कस किया कि सिस्टोलिक मरमर क्या होते हैं, डायस्टोलिक मरमर क्या होते हैं। कुछ मरमर ऐसे होते हैं जो हालो सिस्टोलिक होते हैं। हालो सिस्टोलिक का मतलब ये होता है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग ये होती है कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों में वो मुसलसल हालो टाइप की होती है। उनकी ना एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हालो सिस्टोलिक मरमर्स क्या होती है। ये देखिए, द ब्यूटीफुल टेबल इज हियर, ऑस्कल्टेशन ऑफ हालो सिस्टोलिक मरमर। हालो सिस्टोलिक मरमर में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखने वाले हैं वो है माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दीज थ्री आर हालो सिस्टोलिक मरमर। सो रिमेंबर ऑलवेज, जब आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और एग्जाम्स में आपका वर्ड इस्तेमाल होता है हालो सिस्टोलिक, तो आपने आंखें बंद करके इन तीन के अलावा और कोई सोचना ही नहीं। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू see the word hollow systolic, there are only three murmur you can have the differential in your mind: mitral regurgitation, tricuspid regurgitation, ventricular septal। That's all, बस इन तीन के अलावा नहीं होगा। जिसका मतलब आपके सारे मरमर एक्सक्लूड हो चुके हैं, आपके पास hollow systolic के सिर्फ नहीं तीन मरमर। और आपको पता है कि अगर वो वर्ड इस्तेमाल करे क्वेश्चंस में कि hollow systolic है एंड mitral एरिया पे है, अब मैं तो आगे सवाल ही नहीं पढ़ूंगा, आई विल जस्ट गो विद दिस आंसर, क्योंकि ओनली हालोसिस्टोलिक में ये तो माइट्रल पे आता ही नहीं है, माइट्रल एरिया पे ये भी नहीं आता। तो मेरा क्वेश्चन बगैर देखे मैंने अपने स्टेप्स के एग्जाम्स में आई यूज दिस टेक्निक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैब में यूएसएमएलई में जो सारे सवाल पूछे जाते हैं आपने इस तरह डिफरेंशिएट किया। आपका हालोसिस्टोलिक आया, आपने सिर्फ तीन सोचने, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल। ओके, फिर कहेगा हालोसिस्टोलिक मरमर दैट इज बेस्ट हर्ड ऑन द
बेस्ट हर्ड ऑन द एपेक्स, सवाल ही खत्म, ये आंसर है। फिर कहेगा हालो सिस्टोलिक मर्मर दैट इज बेस्ट हर्ड थर्ड एंड फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। फिर उसके बाद आपने आंसर लगाना है वेंट्रिकुलर सेप्टल, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। फिर उसके बाद आपका आएगा हालो सिस्टोलिक मर्मर, ओके, which is appreciated on third या fourth या second या third which increases with inspiration, ये वर्ड भी आएगा। तो फिर आपको आना चाहिए कि कोई राइट साइड का मर्मर है जो इंस्पिरेशन के साथ बढ़ रहा है और वो हालो सिस्टोलिक है, तो एक ही मर्मर है, वो है ट्राइकस। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टू रिमेंबर दीज ऑल ऑफ द कंसेप्ट्स, बहुत आसान है, बस आपको सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और हालो सिस्टोलिक का वर्ड समझ आ जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एआर्टिक स्टेनोसिस। एआर्टिक स्टेनोसिस में हमारे पास क्लासिकली जो वर्ड इस्तेमाल होता है क्रिसेंडो डेक्रिसेंडो, ये क्या होता है? ये ऐसे है, आप इस डायग्राम में देखें मैंने जो ड्रा किया है, दिस इज क्रिसेंडो डेक्रिसेंडो। क्रिसेंडो का मतलब होता है अपवर्ड जाना, डेक्रिसेंडो का मतलब डाउनवर्ड आना। दिस इज कॉल्ड क्रिसेंडो डेक्रिसेंडो मर्मर, ठीक है। डायमंड शेप्स ही कहते हैं इसको, कि ऐसे S1 के बाद ऐसे बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम। दिस इज क्रिसेंडो डेक्रिसेंडो मर्मर, वेरी इंपॉर्टेंट। इजेक्शन मर्मर है ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टली में इजेक्ट करता है तो ये इजेक्शन मर्मर होगा। इट इज लाउडेस्ट एट द हार्ट बेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरोटिड्स के पास रेडिएट, कैरोटिड्स के पास रेडिएट करता है, ओके। एंड सॉफ्ट S2 हमने अभी डिस्कस किया है एक टेबल बना के, स्प्लिटिंग ऑफ S2 में मैंने आपको बताया सॉफ्ट S2 अगर इन एआर्टिक स्टेनोसिस, ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज वीक पल्स विद डिलेड पीक, बिकॉज देयर विल बी नो ब्लड सप्लाई टू द एओर्टा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टिनोस्ड है एओर्टा, जब स्टिनोस होगी स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम से क्या होगा, आपकी जो पेरिफेरल पल्सेस हैं वो वीक आएंगे, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर व्हाट इज द कॉज ऑफ एआर्टिक स्टेनोसिस। मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, एशिया की बात अलहदा है, यूएस की बात अलहदा है। अगर वर्ल्ड क्वेश्चन है इन एशिया या वर्ल्ड वाइड, नंबर वन कॉज जो है वो कौन सी है, वो है रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर। अगर क्वेश्चन आता है इन यूएस व्हाट इज द नंबर वन कॉज, यूएस में क्या नंबर वन कॉज है, कैल्सिफिकेशन, which is age related, old age में जो calcifications होती है। I repeat here, if the question came what is the most common cause of aortic stenosis, most common cause of aortic stenosis, most common का word इस्तेमाल होता है, तो आपने इस्तेमाल करना है that is rheumatic heart disease। अगर स्पेसिफाई करें in the US that is age related calcifications। फिर उसके बाद एक सवाल आ सकता है नेक्स्ट, एक यंग पेशेंट है, उसकी 40 ईयर एज है और उसको एआर्टिक स्टेनोसिस है। ऑलवेज रिमेंबर यंग एज है, 40 ईयर है, एआर्टिक स्टेनोसिस हुआ है, आपने एक ही डायग्नोसिस पे जाना है, बाइकस्पिड एआर्टिक वैल्व, बाइकस्पिड एआर्टिक वैल्व। बाइकस्पिड एआर्टिक वैल्व क्या होता है वो अभी नीचे मैं दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि बाइकस्पिड वैल्व इज द ओनली वैल्व जो लेस देन 50 इयर्स में प्रेजेंट करता है। एआर्टिक स्टेनोसिस हमेशा 50 के बाद प्रेजेंट करता है। अगर लेस देन 50 होगा, यंग एज होगी, रिमेंबर दिस इज ड्यू टू बाइकस्पिड एआर्टिक वैल्व। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होंगे जी, सिम्टम्स क्या होंगे जी इसके, व्हाट आर द सिम्टम, नो, कोई सिम्टम्स नहीं, एसिम्टोमेटिक होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस इज एसिम्टोमेटिक, most of the cases no symptoms, when symptoms appear it is severe aortic stenosis, remember this, whenever there are symptoms in aortic stenosis, when there are symptoms it means it's severe, okay. In normal aortic mild moderate there are no symptoms, remember it. What are the symptoms? Symptoms of decreased stroke volume, symptoms of decreased cardiac output. What are these symptoms? Like syncope, there will be no supply to the brain, because due to stenosis no supply to the aorta of aorta, no supply to the carotids, no supply to the brain, which will cause syncope. Angina, no supply to the coronary arteries, and there will be exertion. So already we discussed in the flow volume loops that left ventricular pressure will be high as compared to aorta. So this is the aortic stenosis. Now we will discuss aortic stenosis more on this picture. What are pathogenesis? Okay, what are the pathogenesis? Why it is calcified? What is the important pathway that causes the calcification? Okay, we will study a bit more about this. This is bicuspid aortic valve. I am pointing aortic stenosis with green color. This is a normal aortic valve. You can see it is cusp, this is cusp, this is cusp. But this is bicuspid aortic valve. You can see the upper two are having a conjoined cusps. They are attached like this. This is called bicuspid aortic valve. And most important, less than 50. Okay, so what is the calcified aortic valve? It is most common in US.
age-related calcification. What is the mechanism? It is same as the atheroma formation. What is atheroma? Lipids deposition. What will happen in our body when there is a LDL cholesterol? It will injure endothelial cells, and LDL will go inside the endothelial cells from this side. This is aortic side, and this is left ventricular side. From this aortic side, there is the injury of endothelial cells. This LDL will go inside the cells. LDL will be oxidized, and next LDL, when there is oxidation, it will activate macrophages, and macrophages will release very important compound, which is osteopontin. Osteopontin. Osteopontin is very important compound or regulator that will convert the fibroblast, which are a simple, that will be converted into osteoblast-like cells. So osteoblast starts calcification. I repeat one by one. First step is endothelial injury due to shear stress or pressure from the aortic side. Next, LDL from our body in the blood will go inside these endothelial cells. Number 2 point. Number 3, there will be oxidation of LDL. Number 4, oxidized LDL will activate macrophages and there will be release of osteopontin. 6, osteopontin convert fibroblast into the osteoblast cells. Number 7, this osteoblast cells will cause calcifications. That calcification here causes the problem. Is that clear? And second most important question sometimes comes, what is the cause of supravalvular aortic stenosis? Aortic stenosis which is above the valve, above the valve. Above the valve mean this area. This is a valve area, but above the valve here the stenosis occurs sometimes. That is supravalvular aortic stenosis. The only question, only answer you should know from this section is the Williams syndrome. Williams syndrome. We will study in biochemistry what is Williams syndrome. That is the only, and what will be the presentation, like the different blood pressure in upper extremities. Okay, high blood pressure in the ascending aorta. Okay, patient have the unequal carotid pulses. We will study more about this in the biochemistry. What is Williams syndrome? You should just know supravalvular aortic stenosis occur in the Williams syndrome. So the most important, what are the different classifications? It is not very important, but you must know the classification of aortic stenosis severity, which is severe. You should know only this. Okay, what is severe aortic stenosis? Severe aortic stenosis when there is trans-aortic velocity greater than 4 meter per second. The mean pressure gradient between the aorta and the left ventricle is the greater than 40 millimeter mercury. And aortic valve area with A is equal to less than one. That is called severe aortic stenosis. Severe aortic stenosis. Why it is important? Why the severe aortic stenosis? You must remember this, because only severe aortic stenosis is the indication of valve replacement. Okay, severe is when there is jet velocity greater than 4, transvalvular pressure greater than 40, and valve area less than 1. This is indication of the valve replacement. Okay, हमने कब इसको valve को replace करना है? When there is the severe. और other क्या indication है other than this? Severe aortic stenosis with any of the following. हमारे पास angina की, syncope की symptoms हो, and their ejection fraction less than 50%. इको करेंगे, इको में चेक होगा, इको में अगर इजेक्शन फ्रैक्शन उसकी कम है, then we will go for valve replacement. And very important, अगर हम कैबेज प्रोसीजर कर रहे हैं और अगर एओर्टिक का वेल्व का मसला है तो हम फिर भी रिपेयर करेंगे वेल्व रिप्लेसमेंट पर. इज दैट क्लियर? सो वेल्व रिप्लेसमेंट हमने कब करना है? जब स्वेयर की फीचर्स हो. स्वेयर्स की फीचर क्या है? ये स्वेयर्स के फीचर है या ये हैं. ओके, एंड देन एनी ऑफ सिम्टम्स हो या ejection fraction is less than 50 and there is a procedure we are going with a like cabbage procedure. These are the and indication of the valve replacement. Counterpart होता है हमारे पास. We should know that the counterpart aortic, and also there are pulmonary valve stenosis. Pulmonic valve stenosis is usually it is congenital. Okay, and sometime it happen in carcinoid syndrome. It is very rare exams question, very rare. I am giving some alert here, but you should know a basic. Sometimes it may be asked in USMLE steps, MRCPR lab, but in FCPS and MDMS level, it is not important. Okay, so pulmonic valve stenosis, you must know it's happen in carcinoid. Very important question. Carcinoid syndrome causes right-sided valve problem. In right-sided valve problem, pulmonic valve is the number one carcinoid syndrome. This is important question, and also all the features are same as aortic stenosis, and this is also needed, which is percutaneous balloon valvotomy is preferred. What is different between valve replacement and balloon valvotomy? It is actually when we only replace all of the valve. This is called valve replacement. Okay, but we sometimes do the percutaneously balloon valvotomy. We go like making a hole or some intervention from the valve. It's just called balloon valvotomy. It's not needed. Complex things are not needed here. So we're going to back
So we discuss aortic stenosis. Now we will discuss the mitral and tricuspid regurgitation. Mitral and tricuspid regurgitation are hollow systolic. I just discussed with you hollow systolic void. I will point it with the red color from this one. Mitral regurgitation is often most common is post-MI. I discussed with posteromedial papillary muscle rupture. After myocardial infarction, this causes mitral regurgitation. Mitral regurgitation is after mitral valve prolapse. We will study mitral valve prolapse. So mitral valve prolapse can lead to mitral regurgitation. Next cause of mitral regurgitation is left ventricular dilation. Next cause rheumatic fever. This is called mitral regurgitation. What are tricuspid regurgitation? It is only very important point is due to dilation of right ventricle. Remember always, whenever there is dilation of left ventricle, it causes mitral regurgitation. When dilation of right ventricle, it causes tricuspid regurgitation. Okay, very important. Next exams questions. This question. Okay, either it is mitral regurgitation or tricuspid. Both are seen in infective endocarditis. Both are seen in infective endocarditis. When the exams question will came that infective endocarditis is due to Staph aureus, always remember it causes tricuspid regurgitation, most common. Okay. When there are other bacteria that may have the effect on mitral regurgitation. So mitral regurgitation is the, what are the symptoms and what is the area? We discuss the area will be apex because whenever there is a mitral, there will be apex. And very important feature to differentiate is radiation, axillar radiation. Why axillar radiation? Because this causes the dilation of the left ventricle. And dilation of left ventricle causes the apex shift into axilla. So apex area is shifted toward the lateral, more axillary sides. So there will be radiation to axilla. Okay. So now we will discuss the more points about this regurgitation. Okay, more points about this regurgitation. This is regurgitation. Okay. So for this table, which is hemodynamic changes in mitral regurgitation, quickly I should revise it here, but it is only important for the USMLE and Lab 1 students. Okay, only important. What are the mitral regurgitation in the acute mitral regurgitation changes? What are the different changes in compensated and decompensated? Okay, so it is a quick review. In acute mitral regurgitation, preload will be high, afterload will be low. Okay, there is no change in contractility. Ejection fraction is increased in acute mitral regurgitation, and forward stroke volume is decreased. Okay, ejection fraction is the quantity that is going out of the left ventricle. इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब वो ब्लड है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, कहाँ जाता है हमें नहीं पता, बस निकले लेफ्ट वेंट्रिकल से, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन. फॉरवर्ड स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब वो वॉल्यूम होता है जो 100% सक्सेसफुली एओर्टा में जा रहा है. These two concepts are very important. Ejection fraction, forward stroke volume. Stroke volume, forward stroke volume, ejection fraction is the fraction of end-diastolic volume that is going out of left ventricle. अब वो बढ़ जाती है. लेकिन फॉरवर्ड स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों कम होती है? इसलिए क्योंकि हमारे पास जब लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट करता है, इस डायग्राम में देखें, ये यहाँ इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. जब ये एओर्टा में ब्लड पंप करता है, ठीक है, ऐसे, तो हमारे पास कुछ ब्लड जो है ना वो इधर वापस माइट्रल के वेल्व से लेफ्ट एट्रियम चला जाता है. ठीक है, अब इजेक्शन फ्रैक्शन जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड तो निकल गया, लेकिन वो इधर ब्लड नहीं गया, वो इधर चला गया. तो जो इधर जाना था एओर्टा की तरफ, वो था फॉरवर्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. तो इसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ेगा एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन. कंपनसेशन में क्या है कि सारी चीजों की हार्ट जो है कंपनसेट कर लेगा, सिर्फ प्रीलोड बढ़ेगा, बाकी कोई चीज नहीं आएगी, और इजेक्शन फ्रैक्शन क्रॉनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन. और जो फॉरवर्ड स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा था, यानी कि हार्ट के लिए नुकसान हो रहा था, अब वो नो चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने कंपनसेट कर लिया. उसके बाद कंपनसेशन के बाद डीकंपनसेशन कब स्टार्ट होगी? जब सारा का सारा हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा, हार्ट फेलियर के साइन आना स्टार्ट हो जाएंगे. ये प्री लोड ज्यादा है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल भरा हुआ है, आफ्टर लोड भी ज्यादा है, ऊपर दबाव भी ज्यादा पड़ा हुआ है, कंट्रैक्टिलिटी है नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, हार्ट फेल हो चुका है, इजेक्शन फ्रैक्शन जा ही नहीं रही, क्यों? सारा का सारा पुल अप हुआ हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज डीकंपनसेशन, हार्ट फेलियर, एंड स्टेज, फॉरवर्ड स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम. दीज आर द डिफरेंट चेंजेस. परमानेंट पेसमेकर का ट्राइकस्पिड के साथ क्या रिलेशन है? जब हम पेसमेकर डालते हैं, पेसमेकर डालने की एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन. ओके, इट इज एक्चुअली द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द परमानेंट पेसमेकर. जो परमानेंट पेसमेकर पेशेंट्स होती हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन है, पेशेंट हु हैज बीन placed a permanent pacemaker 2 years back, which of the following is the most likely complication you see after 2 to 5 years later? So complication tricuspid regurgitation. You must know this only, nothing else. Okay, then हमारे पास आ जाता है what are the indication of mitral valve regurgitation, severe mitral valve regurgitation. Surgical indication, what are the indication? When we will
correct mitral regurgitation. Primary mitral regurgitation and secondary mitral regurgitation. What is this? Primary mitral regurgitation is primary problem in the valve. This is called primary mitral regurgitation. Okay. What is secondary mitral regurgitation? Secondary mitral regurgitation is secondary to left ventricular chamber defect. Okay. Primary valve problem is valve problem. It is primary mitral regurgitation. It's regurgitation due to problem in the valve. अब वो valve की क्या cusp में problem हो सकता है? Valve में chorda tendini का problem हो सकता है. Valve में हमारे पास capillary muscles का मसला हो सकता है. This is problem in the valve. But secondary कौन से होंगे? मैंने अभी आपको बताया. Left ventricular dilation, chamber dilation, infective endocarditis. These are secondary causes. Okay. So primary, if there is a problem in the valve, तो उसमें क्या होगा? हम when there is left ventricular ejection fraction, there is less than 30 and the symptoms are present, so we will do the surgery. Okay, we will do the surgery. Only remember this line. Okay, don't confuse yourself. Only remember this line. Only remember, in primary mitral regurgitation, when there are symptoms and ejection fraction are less than 30, we will consider surgery only. Okay, but there are secondary cause. Okay, no surgery. No surgery in secondary cause, only medical management. क्या medical management है? Infective endocarditis, give antibiotics. Okay. What are the other causes? Like dilation है left ventricle, treat the heart failure. So it is just the medical management. So we discuss aortic stenosis. Next is mitral valve prolapse. Okay. What is mitral valve prolapse? Mitral valve prolapse is presenting with a late crescendo murmur with mid systolic click. That is very important. हमने discuss किया the murmur that is presents between the S1 and S2 is the systolic. Okay. But mitral valve prolapse में एक खूबसूरत word इस्तेमाल होता है, that is mid systolic click, MC. You can appreciate this MC. Okay, it starts between S1 S2 and there is a crescendo. Crescendo means uprising murmur. Like this is a click and there is uprising murmur like this. This is click and uprising murmur. This is mitral valve prolapse murmur. Late crescendo murmur preceded by mid systolic click. Okay, best heard over apex, just loudest before S2. You can see this is a maximum loud bit before S2. Okay, it is benign and it can cause infective endocarditis. Okay, can be caused by rheumatic fever, chorda rupture. And the most important MCQs to remember from mitral valve prolapse is myxomatous degeneration. Important. What is myxomatous degeneration? It is in the Marfan syndrome. It is in the Marfan syndrome. What is Marfan syndrome? We discuss in biochemistry. It is the problem. So what will be in the Marfan? Myxomatous degeneration. Okay. So there is the degeneration of our structure in the valve. Okay. So MC is mid-systolic click. What is the cause of mid-systolic click? When mid-systolic click is created, when there is a tensing of chorda tendini. What is this? Let me show you a picture. What is the tensing of chorda tendini? Okay, see this picture. Very important, which is mitral valve prolapse. This is the standing mitral valve prolapse when patient is standing. Remember this. This is patient when standing. You can see in this is mitral valve prolapse. You can see that this mitral valve is going toward the left atrium. Like this is prolapsing like this. Okay, so this is a prolapsing. You can appreciate here. This is prolapsing. And you can see that there is a tensing here. Tensing at this position. Tensing here. There is a tensing of chorda tendini. Chorda tendini are these. These are chorda tendini. Okay. These are papillary muscles. Okay. So you can see here that there is tightening of the chorda. Here, this is tightening. The tightening of chorda tendini creates mid-systolic click. Okay. Mid-systolic click. So I can also appreciate the other concept we discussed, that when there is a squatting position, what happens in squatting position? It increases preload. What happens in squatting position? It increases afterload. So you can see in this picture, when increase in preload, increase in afterload, there is a more left ventricular volume here as compared to this. There is a less volume here in standing, and in squatting position, there is a more left ventricular volume. So you can see that the murmur in this will be decreased.
in squatting position. Why? Because more of the blood in the left ventricle causes failure of this. So there will be a no regurgitation. There will be no flow between the valve. There will be no murmur. Very important point. So this diagram is telling you what is the importance of squatting to decrease murmur in mitral valve collapse. Okay, so we discussed mitral valve collapse also on going to the next murmur, that is ventricular septal defect. It is very easy and very easy. That is hollow systolic murmur. We discuss it, hollow systolic and loudest as tricuspid area. It is only one important point you should remember is that large ventricular septal defect create no sound or low intensity sound. Large creates low intensity sound. Remember always. Okay. Up many of the students will ask why it is happening. Okay. Large ventricular septal defects को तो ज्यादा sound आनी चाहिए, harsh आनी चाहिए. Low intensity क्यों है? ये reason है. अच्छा मैं आपको बताता हूँ. When ये जो है ओके अब इसमें देखें दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड उनके दरमियान ये हमारे पास सेप्टम है. ओके ये हमारे पास है सेप्टम. मैं इसको डिफेक्ट कर देता हूँ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड नाउ द ब्लड विल गो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट वेंट्रिकल. ओके अब इस चीज को देखें कि अगर मैं इस छोटे से डिफेक्ट को अप्रिशिएट करूं कि इसकी साउंड आएगी. यस इसकी साउंड आएगी. सो इट विल बी हाई इंटेंसिटी साउंड बिकॉज क्यों बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड एरिया. क्या है एरिया डिक्रीज है. ठीक है एरिया एरिया कम है बिटवीन दीज सेप्टम. देखो उसकी वजह से क्या होगा जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है एंड वेलोसिटी की वजह से फ्लो जब वेलोसिटी आती है ज्यादा होती है तो हमें आवाज ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू दैट. अगर मैं इसके डिफेक्ट्स को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ. लेट्स सी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ऐसे. अब देखो अब आवाज ही नहीं आएगी. क्यों क्योंकि इतना ज्यादा पूरा का पूरा सेप्टल डिफेक्ट है. जब वो सारा ब्लड चला जाएगा ऐसे आवाज क्रिएट ही नहीं होगी. तो इसलिए लार्जर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स में वॉइस या साउंड इंटेंसिटी लो होती है, स्मॉलर में ज्यादा होती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो वी हैव कवर द सिस्टोलिक. नाउ वी विल कवर द डायस्टोलिक. ओके so so now we will continue the diastolic murmur, that is aortic regurgitation. Okay the most important line you must know that is the early diastolic murmur and decrescendo murmur. Decrescendo I told you like this. First is higher and there will be decreasing. This is decrescendo murmur like this. And it is a high pitched blowing. Always remember regurgitant murmur are high pitched and blowing in nature. Regurgitant are high pitched and blowing in nature. And it will be heard at the base mean second right intercostal space. कौन से एरिया में आर्टिक स्टेनोसिस वाले में मैंने आपको बताया था. बट व्हेन देयर इज अ रूट डायलेशन एओर्टा की बेसिकली जो रूट होती है ना रूट वो डायलेट हो जाती है. जिस तरह एन्यूरिज्म बनती है यूं समझे कि इस तरह जो एओर्टा जहां से स्टार्ट हो रहा होता है वहां से उसका डायलेशन हो जाती है. डायलेशन की वजह से रिगर्जिटेशन प्रोड्यूस होती है. अब उसकी जो डायलेशन होती है रूट की उसका जो मरमर आएगा वो होगा सेकंड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस में. और बाकी जो वेल्व की वजह से इशू आएगा वेल्व का प्रॉब्लम आएगा दैट विल बी द नॉर्मल पोजीशन. कहां पे होगी वो हमारे पास लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर में. ओके नेक्स्ट व्हाट आर द कॉजेस. मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाट आर द कॉजेस. कॉजेस क्या हैं. कॉजेस आर बाइकस्पिड एआर्टिक वेल्व एंडोकार्डाइटिस एआर्टिक रूट डायलेशन एंड ट्यूमेटिक फीवर. अब इसके ना काफी सारे सिम्टम्स हैं एआर्टिक रिगर्जिटेशन के जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वाइड पल्स प्रेशर. वाइड पल्स प्रेशर बहुत ज्यादा वाइड आता है. क्यों आता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो जो पल्स का प्रेशर है वो वाइड हो जाएगा. इसको हम कहते हैं हाइपर डायनामिक पल्स. हेड बॉबिंग क्या होती है जब आप क्योंकि पर्सन का जो ब्लड होता है वो एओर्टा में जाता है और फिर वापस आ जाता है. वापस आने की वजह से व्हाट विल बी हैपनिंग ये जो कैरोटिड्स वो ब्लड सप्लाई जा रही होती है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से हेड बॉबिंग स्टार्ट हो जाती है. डिजीनेस अनकॉन्शियसनेस. पल्स आपकी अचानक से हाई आती है जिसको कहते हैं पिस्टल शॉट फेमरल पल्सेस. क्या आप उसके ऊपर हाथ रखते हो अचानक से जोर से आती है पल्स और फिर अचानक से जब वो रिगर्ज होना स्टार्ट होता है एओर्टा से फिर वो रुक जाती है नीचे चली जाती है. इसलिए इसको कहते हैं पिस्टल शॉट्स फेमरल पल्सेस. मतलब अचानक से जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट करता है और जब ब्लड एओर्टा में जाता है और फिर उसके बाद
वापस आता है, उसकी वजह से जो डायस्टोलिक का प्रेशर है वो कम हो जाता है, सिस्टोलिक हाई होता है। तो जो पल्स का गैप होता है ना, वो हमें काफी सारे डिफरेंट ऑर्गन्स में फील होता है। इवन के आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हिपैटिक में भी पल्सेशन आती हैं, हिपैटिक रिगर्जिटेशन, ठीक है। नेल बेड में भी पल्सेशन आती हैं, उसको कहते हैं क्विंकी पल्स। तो देयर आर मैनी मैनी डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं आर्टिकल रिगर्जिटेशन के, जहाँ जहाँ पल्सेस स्टार्ट होती हैं वहाँ पे पल्सेशन फील होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज द माइट्रल स्टेनोसिस। अब माइट्रल स्टेनोसिस हमने तमाम डायस्टोलिक मरमर में कहा था कि वो क्या होंगे, S2 के बाद होंगे, S2 के बाद होंगे, हमने डिस्कस किया। ओके, अब हम माइट्रल स्टेनोसिस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके जो लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट ओपनिंग स्नैप, ओके, ओपनिंग स्नैप, delayed rumbling mid to late murmur, opening snap, and mid to late diastolic rumbling murmur. This is characteristic of mitral stenosis. तो सबसे पहले ओपनिंग स्नैप आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक एब्रप्ट halt in the leaflet motion in diastole। जब सबसे पहले देखो, इमेजिन करो, पिक्चर इन योर माइंड, ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है। अब द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज कमिंग टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, and now what is happening, there is the sudden opening of valve, okay, rapid opening of the valve. What will happen when there is a sudden obstruction? Because there is a stenosis, a small sound is created, that is opening snap, okay। जैसे ही सबसे पहले valve खुलता है और पूरा का पूरा ब्लड उस स्टेनोस्ड valve के ऊपर जाके ब्लड लगता है, उस वो एक ओपनिंग स्नैप प्रोड्यूस करती है साउंड, okay? फिर उसके बाद ऐसा ऐसा स्टेनोसिस है, तो फिर रंबलिंग साउंड आती है, लेकिन वो मिड मिड से लेट आती है। मिड का मतलब है कि S2 के फौरन बाद नहीं आएगी, जहां से स्टार्ट होगी ऐसा ऐसा। सो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग स्नैप एंड डिलेड रंबलिंग मिड टू लेट मरमर। एक सवाल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवेरिटी ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस को कैसे चेक करेंगे? द इंटरवल बिटवीन द S2 एंड ओपनिंग स्नैप्स, ये डिटरमिन द सेवेरिटी। कि ये जो फासला है, ये इंटरवल है, दिस डिटरमिन्स द सेवेरिटी, कि S2 के बाद कितना ओपनिंग स्नैप जल्दी आ रहा है। जितना ये जल्दी आएगा ओपनिंग स्नैप, उतना सेवेरिटी ज्यादा होगी। डिक्रीज इंटरवल बिटवीन S2 एंड द ओपनिंग स्नैप्स टेल अस द सेवेरिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सेकंड एमसीक्यूज जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली स्पेसिफिक सीक्वल ऑफ रूमेटिक फीवर, दैट इज माइट्रल स्टेनोसिस, ओके। फिर हमने थर्ड एमसीक्यूज, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, माइट्रल स्टेनोसिस कॉजेज द लेफ्ट एट्रियम डायलेशन। For left atrium dilations leads to the pulmonary congestion, and very important MCQs that comes in our exams is the atrial fibrillation. And there is dilation of left atrium that causes the automatic electrical generating ability of pulmonary veins associated with the left atrium that causes atrial fibrillation. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था आर्टनर सिंड्रोम। आर्टनर सिंड्रोम क्या होता है? जब लेफ्ट एट्रियम इंलार्जमेंट होती है, लेफ्ट एट्रियम इंलार्जमेंट, ओके, व्हाट विल हैपन, इट कॉजेज द डिस्फेजिया। बिकॉज क्योंकि एसोफेगस लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर होता है। फिर हमने डिस्कस किया था ये डिस्फोनिया कॉज करता है, क्यों, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को कंप्रेस करता है। सो दिस इज कॉल्ड आर्टनर सिंड्रोम। Dysphagia, dysphonia due to left atrial enlargement in mitral stenosis, and also due to pulmonary congestion is causes hemoptysis and right heart failure. So, so mitral stenosis causes right heart failure because क्यों pulmonary congestion होगी, pulmonary remodeling होगी, it's related to pulmonary hypertension and secondary right heart failure. So this is very important. Okay. So next, what are the other concepts related to this mitral stenosis? Okay, this is table, very important table. You can see this. What is the most important is vast majority of the cases the cause is rheumatic heart disease, and sometimes it is due to age related and radiation induced mitral stenosis. It presents with dyspnea, orthopnea, END hemoptysis. It presents with pulmonary edema, right-sided heart failure, also atrial fibrillation, and increase the risk of systemic ambulation. This is next MCQs. It is next important MCQs. Okay, systemic ambulation. Systemic ambulation. It is MCQs. Okay. So diagnosis is very opening snap with mid systolic rumble and echocardiography. There will be increased transmitral flow velocity. What is the treatment of mitral stenosis? We will do the valvotomy and surgical replacement. Okay. So our last topic is the patent ductus arteriosus. Okay. Our patent ductus arteriosus is our last topic. So what is the patent ductus arteriosus? We discuss in our normal physiology, and we discuss in the fetal circulation what is ductus arteriosus. Ductus arteriosus is the like a connection. What is the connection? This is ductus arteriosus is the connection
uh, between this pulmonary trunk and descending aorta. You can see this. This is the ductus arteriosus. When it is normally closed after the birth, but when it's not closed, it is patent ductus arteriosus. Okay, so what are the findings? It is due to prostaglandin production by the placenta. We discussed that when there is a more prostaglandin, there will be the patency of the ductus arteriosus. It is fails to close after delivery. So what is most important finding is continuous machine-like murmur. Very important, machine-like murmur. And wide pulse pressure and bounding pulses. Next, metabolic acidosis. Why? Why? Because the reason is that the deoxygenated blood will go into the descending aorta and deoxygenated blood will causes the metabolic acidosis. Also, it presents with cardiovascular strain, mean there will be a more pressure on the, so this will lead to more heart rate tachycardia and there will be a compensatory changes that is cardiomechanic. And in the later stage of after years, it can lead to Eisenmenger syndrome. Eisenmenger is a reverse shift. Okay, normally it is left to right shunting, but at a later stage of time, the shunt is reversed. That is called Eisenmenger syndrome. Patent ductus arteriosus is left to right shunt. Normally it is left to right shunt, but after a years of year, there are modification and changes that lead to right to left shunt. That is Eisenmenger syndrome. We will study in our next pathology sections what are the different diseases, and we will study more about this Eisenmenger syndrome. Okay, so coming to our this first topic, patent ductus arteriosus. Okay, what is this? It is continuous machine-like murmur. Okay, and this is best heard at left infraclavicular area. This is the important area where we can appreciate this murmur. It is important MCQs here for FCPS, MDMS, USMLE, and PLAB. Congenital rubella syndrome and prematurity. What are the causes of the patent ductus arteriosus? That is congenital rubella syndrome and prematurity. So, okay, so today we have discussed the splitting of S2. We have discussed the different position in our uh, heart where we can appreciate the different type of murmurs. Then we discuss the different maneuvers that can decrease or increase our murmurs intensity. And then we discuss the different type of murmur in the systolic, diastolic, and continuous. And also we have studied the difference between systolic, diastolic, and hollow systolic murmurs. Okay, so thank you so much for all your cooperation. So